Hello everyone, hello Ale. Today we'll learn the difference between Antworten and Beantworten and how to use both these verbs. आज हम लोग सीखेंगे कि कहाँ Antworten यूज करना है एंड कहाँ Beantworten यूज करना है एंड दोनों में क्या डिफरेंस है. Antworten. Antworten is used to answer to a particular person and Antworten is a fixed dative verb. So after Antworten, we will always use the dative case and it will be referred to some kind of person. Antworten एक dative verb है जो कि यूज किया जाता है किसी पर्सन को आंसर करने के लिए. Antworten is always used to refer to answer to a person. एंड जो पर्सन होगा वो पर्सन हमेशा डाटिव केस में आएगा क्योंकि Antworten एक फिक्स डाटिव वर्ब है. एग्जाम्पल्स: Ich antworte dem Lehrer. Sie antwortet mir. Er antwortet seiner Mutter. Wir antworten dem Kunden. So all the Antworten sentences are taking dative object and which is a person. So जितने भी सारे Antworten के एग्जाम्पल सेंटेंसेस लिखे हैं इधर, सारे के सारे में एक डाटिव ऑब्जेक्ट आ रहा है जो कि एक इंसान है. Beantworten. We'll use Beantworten when we'll use to refer to some kind of answering to questions, emails, messages, tasks or any kind of applications. Beantworten जो वर्ब है वो किसी क्वेश्चन का, ईमेल का, मैसेज का, टास्क का, कोई एप्लीकेशन का आंसर देने के लिए यूज किया जाता है. Beantworten is a accusative verb. That's why we'll use accusative case after Beantworten. Beantworten एक accusative verb है तो Beantworten के साथ accusative case लिया जाता है. Examples: Ich beantworte die Frage. Sie beantwortet die E-Mail. Er beantwortet alle Fragen. Wir beantworten die Nachricht. Now, here we learn, can both Antworten and Beantworten be used together in a single sentence? The answer is yes. Both of the verbs can be used together in the same sentence, but they will function in a different way because their meanings are different and they are used in two different places. Antworten, which will mean to reply to a person, and it will always take dative case, and Beantworten refers to answering to a thing and it will take accusative case. So अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या Antworten Beantworten दोनों एक साथ एक जगह एक ही सेंटेंस में यूज हो सकता है. आंसर है हाँ, हो सकता है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है तो दोनों अलग तरीके से एक ही सेंटेंस में यूज किए जाएंगे, लेकिन एक सेंटेंस में दोनों की यूजेज आ सकती है. Antworten जो है वो यूज किया जाएगा किसी इंसान को आंसर करने के लिए एंड एक डाटिव वर्ब है Antworten तो उसके साथ डाटिव केस लिया जाएगा. एंड Beantworten जो है वो रेफर करेगा किसी थिंग के लिए, किसी थिंग का आंसर के लिए Beantworten यूज किया जाएगा एंड वो एक एक्यूजेटिव वर्ब है तो उसके साथ एक्यूजेटिव केस लिया जाएगा. So here is one example which is referring to a real life situation where we are going to use both the verbs. इधर एक एग्जाम्पल है जो कि एक रियल लाइफ सिचुएशन पे के ऊपर बना है जहां पर हम लोग दो वर्ब को एक साथ यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, वन टीचर इज आस्किंग, Warum bist du so spät? Why are you so late? Now the student can answer like this: Ich antworte dem Lehrer und beantworte seine Frage. Means the student can say, I am replying to the teacher and answering his question. So Antworten के साथ इंसान के आंसर के लिए बोला जाता है, डाटिव में आता है, that's why dem Lehrer. एंड Beantworten के साथ एक्यूजेटिव केस लिया जाता है एंड वो थिंग के आंसर के लिए यूज किए जाते हैं, दैट्स व्हाई seine Frage which is accusative here. Now here we have three sentences, three practice questions, practice sentences for you all. आप ये तीनों सेंटेंस का आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो एंड आई विल चेक आफ्टर यू राइट द आंसर्स.
So you guys can write the answers to these 3 sentences in the comment section of this video. After you write your answers, I will check them. Thank you everyone for watching my videos. Like, share and subscribe for more such content.